Hello everyone, Nabs is here. Welcome back to the channel with the second episode of Metal Gear Solid 3 Snake Eater. पिछले एपिसोड में हमने देखा केजीबी के सोल्जर्स ने सोकोलॉव को एक फैक्ट्री में बंद करके रखा था, जहां हमने छुप के अंदर जाके सोकोलॉव को रेस्क्यू किया और बाहर आते टाइम हमने ग्रू के सोल्जर्स और ग्रू के मेजर ऑसलॉट से भी हमने फ़ाइट की और उसे हराया। पर उस वक्त सोकोलॉव भाग गए थे, तो अब हमें उन्हें ढूंढना होगा। तो चलो चलते हैं। यार सोकोलॉव गए कहाँ होंगे? आस ही पास में रहते, छुप के ढूंढना आसान हो जाता। कहाँ पे गए होंगे? पक्का कोई दुश्मन के एरिया में होगा। सुसु कर रहे क्या? You okay? ओ नहीं, सोच रहे थे। From the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. That's what they were making you build. Yes. The Shadowheart. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBM. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain. Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No. This is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. ओके, सो सोकोलॉव जो वेपन बना रहे थे उसका नाम है सैगोहॉर्ड, और वो अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। फ़ेज़ 1 पे है। फ़ेज़ 2 पे वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, और अगर वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो असली डर की ज़िंदगी शुरू होगी और कोल्ड वॉर का ख़त्म होके वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, और जिसके पास भी वो वेपन होगा वो ये वर्ल्ड वॉर जीत जाएगा, और असली टेरर की ज़िंदगी तब शुरू होगी, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर फिर कॉमन हो जाएगा। हाइट से सोकोलॉव को डर लग रहा है। क्या ये वही है जिसे मैं सोच रहा हूँ? I was right.
boss. डोंट टेल मी ये धोखा है। Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. इनके पास सुपरनेचुरल पावर है? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? Hornets. ओके, सो ये आदमी छोड़ रहा है ये हॉर्नेट्स। मतलब उनके पास क्या सुपरनेचुरल पावर है? ये क्या बना दिया भाई? My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. ठीक है। Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying? भाई एक सेकेंड, वो क्या रहा है ये? कोई मधुमक्खी छोड़ रहा है, किसी की आंख बाहर आ रही है, खून की बारिश हो रही है, कोई आत्मा पीछे आ रही है। ये मिलिट्री बेस गेम को क्या बना दिया है? Kuwabara, Kuwabara. अब ये अलग से थॉर बन रहा है। ओ कर्नल बॉलगिन। Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. धोखा दे दिया। Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? मुझे लग रहा है स्नेक बहुत बुरा पीटेगा। बंदूक ही खोल दी, वाह।
हाथ तोड़ दिया। He's seen my face. We can't let him live. We're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, on to Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Drift away. My place is with them now. क्या बॉस ने सही में धोखा दिया है? क्योंकि स्नेक को उन्होंने मतलब मारा नहीं, ऐसे फेंक दिया और ऑब्वियसली वो तो उठेगा ही। और लास्ट में कहा कि बह जाओ, मेरी जगह इनके साथ है। तो सही में क्या बिट्रेयल किया है या मिशन के लिए उनके साथ है? देखते हैं। Snake, can you hear me? Yeah, just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major, the boss, she's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment.
Move the healing cursor with the left analog stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left analog stick to select the medical item and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. ओके, सो फिलहाल तो लगता है बॉस ने धोखा दे दिया है। बॉस सोवियत यूनियन के लिए काम कर रही है, वो भी कर्नल वॉल्गन के अंडर में। और पर मे बी बॉस ने हमें जानबूझ के नहीं मारा, क्योंकि शायद से मे बी वो भी हमारे साथ ही मिशन में है। ये हो सकता है इसीलिए नहीं मारा, तो वो आगे जाके पता चलेगा। और इनके पास कई के पास जैसे सुपर नेचुरल पावर्स है, जैसा कि हमने देखा खून की बारिश हो रही थी और कोई आत्मा आ रहा था, कोई तो और एक बीज कंट्रोल कर रहा था, किसी की तो आंखें बाहर आ रही थी, पता नहीं। और एक और बंदा था, तो उनके पास क्या पावर्स होंगी। और कर्नल वॉल्गन के पास तो इलेक्ट्रिसिटी की पावर है। और ये सब लोगों ने सोकोलॉव को उठा के वो सोकोलॉव के रिसर्च सेंटर की तरफ वो जा रहे हैं शैगोहॉर्ड को लेने। तो पहले तो स्नेक की पूरी तरीके से इलाज करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। इस जगह क्या हुआ है? सफरिंग फ्रॉम अ डीप कट, ब्लीडिंग, नो बैंडेज अप्लाइड, ओके, नॉट येट डिसइंफेक्टेड। ओके, तो पहले इसे डिसइंफेक्ट करना होगा। ये रहा। और फिर ब्लड फ्लो रोकना होगा, तो उसके लिए आई गेस क्या बताया था मैं पैरामेडिक ने? ओके, तो मैं ऐसे पूरी तरीके से सब इलाज करके स्नेक की फिर मैं आप सबसे मिलता हूँ। इसमें काफ़ी दर्द होगा। मेरा अब एक ही सवाल है, इस हालत में स्नेक मिशन कैसे करेगा? सोकोलॉव को वापस कैसे लाएगा? Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up?
तो ये लोग सैगोहॉर्ड को अपने साथ ले जा रहे हैं। अगर फेज़ 2 कंप्लीट हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। तो फेज़ 2 खत्म होने के पहले हमें इस चीज़ को रोकना होगा। ये इतनी दूर से एक दूसरे को देख पा रहे हैं? नहीं, वैसा नहीं, थोड़ा फिल्मी बनाने का कोशिश किया है। ये बेचारा अफसोस में बैठा हुआ है, इसकी गोली अटक गई। Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the तो बॉस और Shagohod. उसके और 4 साथियों को एक साथ कोबरा कहा जाता है। What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death? Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. ओके, तो ये लड़की पहले साइंटिस्ट सोकोलॉव के लिए काम करती थी और अब ये लोग इसे भी उठा के ले जा रहे हैं। Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! ओके, तो सोकोलॉव की रिसर्च फैसिलिटी न्यूक कर दी है कर्नल वॉल्गिन ने। वैसे ये मेजर मना कर रहा था कि भले ये हमारे दुश्मन है पर है तो हमारे देशवासी ही, पर कर्नल ने माना नहीं।
ओके, तो वॉल्गिन ने बहुत चालाकी का एक काम किया है, क्योंकि वो मिसाइल यूएस का था और बॉस ने वो गिफ्ट दिया था कर्नल वॉल्गिन को एज अ कि वो डिफेक्ट कर रही है सोवियत यूनियन के लिए। तो मिसाइल चलाने के समय वॉल्गिन ने कहा कि क्योंकि ये मिसाइल यूएस की है तो इसका नाम भी यूएस पे ही आएगा ये मिसाइल बॉम्ब करने के लिए। तो इसमें उनका कोई हाथ का नामो निशान नहीं रहेगा। और यहाँ पे बहुत एक अच्छा गाना चल रहा है, पर मैं ये चला नहीं सकता क्योंकि हो सकता है कॉपीराइट आ जाएगा, तो मैं ये इसको स्किप कर दूंगा। ओके, तो गेम का टाइटल अभी दिखा रहे हैं, मतलब अब असली गेम शुरू हो रहा है। ओके, तो एक हफ्ते बाद दिखा रहे हैं हमें। Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload to antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous Mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. ओके, सो हायर ऑथोरिटीज को लग रहा है कि स्नेक भी बॉस के साथ मिला हुआ है और वो भी धोखेबाज है, तो इसीलिए उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। मेन चीजें मैं आप लोगों को बताते हुए चलूंगा। They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard that?
The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin, of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the Boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the Boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The Army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the Boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The Boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week, and if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal, huh? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the Boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. ओके सो एक लाइन में अगर पूरी तरीके से बोलूँ तो बॉस को मारना है और ये साबित करना है कि ये बॉम्ब डिस्ट्रक्शन के पीछे यूएस का हाथ नहीं है. The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders?
There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the two NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. I've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Control, unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. भाई कसम से इसको गेम बोलना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, पिक्चर ज़्यादा लग रहा है क्योंकि कट सीन्स बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़े बड़े हैं, अच्छे भी लग रहे हैं, मज़े भी आ रहे हैं और मुझे लगता है कुछ देर बाद से ये लोग अच्छे से खेलने देंगे क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ इंट्रोडक्शन की, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है और पूरे मिशन के बारे में, और कुछ देर पहले हमने देखा पोस्टर आया तो असली गेम अभी स्टार्ट हुआ, तो चिंता मत करो, गेम प्ले ज़रूर होगा अच्छे से, बहुत बढ़िया होगा, ऐसी लेजेंडरी सीरीज़ थोड़ी है गेम में। This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss? This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. I must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. Yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right, then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square zero. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission.
Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous Mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. He'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How'll I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and "Lali Lule Lo." Lali Lule Lo. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It will be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. ओके सो असली ऑपरेशन स्नेक ईटर अब शुरू हो रहा है, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। पहला तो हमें ये प्रूव करना है कि जो धमाका मतलब जो न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हुआ था सोकोलॉव के टॉप सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी पे, उसमें यूएस का कोई हाथ नहीं, वो कर्नल वॉल्गिन के वजह से हुआ है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है सैगोहॉट को ढूंढ के उसे डिस्ट्रॉय करना। थर्ड है दी बॉस को एलिमिनेट मतलब मारना, और लगे हाथों क्रूशेव ने ये भी कहा है कि कर्नल वॉल्गन को भी मारना, क्योंकि वो उसे गद्दी से हटा के खुद बैठना चाहता है सोवियत यूनियन के रूल में। सो ये सारे ऑब्जेक्टिव है जो हमें इस ऑपरेशन स्नेक ईटर में कंप्लीट करना है। वहाँ पे एक स्नेक है, वैसे मुझे खाने के लिए भी मारना होगा बहुत सारे एनिमल्स को, क्योंकि खाना भी लिमिटेड है, जो कि फर्स्ट एपिसोड में गेम के पहले ही बोल दिया था। तो इसके लिए मुझे शिकार भी करना होगा खुद के लिए, तो इसे मारना होगा। अबे रुक जा, घूमे जा रहा है इधर उधर। मिला। यहाँ पे एक और है, रुको। ये घोड़े की आवाज क्यों आ रही है? यहाँ पे घोड़ा भी है क्या? कहाँ पे घोड़ा है? घोड़े की आवाज क्यों आ रही है? घोड़ा भी शिकार किया जा सकता है क्या? मैं घोड़ा क्या शिकार करूंगा?
Looks like death wasn't ready for you yet. जिसे मारना था वो बहुत जल्दी नहीं मिल गई। Boss. That arm still hurt? पता खुद ही मार के खुद ही पूछ रही है हाथ दुख रहा है कि नहीं। What are you doing here? नहीं ये गन नहीं तोड़ना। अरे ये गन भी तोड़ दी। Go home. अरे यार स्नेक कितनी बार बेइज्जती करवाएगा। Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss. I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. That should stir things up a bit. You'd better hurry. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Why'd you defect? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? You don't know the truth yet. But sooner or later, you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. You know me too well. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. बताओ फोर्स को अलर्ट भी कर दिया, प्लेन भी डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या बताओ, और हाथ भी तोड़ ही दिया शायद से। Now, go home. बताओ अभी ये भी कह रही है घर जाओ, वरना अगली बार अगर मुलाकात हुई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। क्या यार स्नेक इसे मारना आया था, स्नेक को ही मार के चली गई, मतलब पीट के चली गई, वो भी फिर से। This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do,
Don't let them see you. ओके, तो बड़ी मुश्किल हो गई है, गन मेरे पास नहीं है, फोर्स अलर्ट हो गई है और मुझे इन सब से बच के छुप के जाना होगा। सभी अलर्ट हो गई है ये ड्रोन फटने की वजह से। थोड़ी देर में आते होंगे। हाँ, आ गए। अब इन सारे फोर्स से मुझे बच के जाना होगा। मार तो नहीं सकता क्योंकि गन नहीं है। कैमोफ्लेज कर लूँ। Patrol here. It appears we've been infiltrated. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. 95% तो कैमोफ्लेज हूँ, देखना तो नहीं चाहिए इनको। अभी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ वेट कर सकता हूँ जब तक कॉशन बहुत ज़्यादा लो नहीं हो जाता तब तक, या कॉशन ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि बाहर बहुत सारे फोर्स हैं। तो वेट करते हैं। सामने देख पा रहे हो, सामने ही सोल्जर है, और सिर्फ ये एक नहीं, बहुत सारे सोल्जर्स है। कोई तो हथियार होगा। स्टन ग्रेनेड। ओके, अगर गलती से भी पकड़ा गया तो स्टन ग्रेनेड से स्टन करके निकल सकता हूँ। चलो वेट करते हैं। This is HQ. Patrol here. The situation is normal. Understood. Return to your position. ओके, तो अब कॉशन खत्म हुआ है और ये लोग अपने अपने पोजीशन में लौट रहे हैं धीरे धीरे। तो मुझे भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। सामने कोई सोल्जर दिख तो नहीं रहा। निकल लूं क्या? नहीं, निकल के दिखता है। हो रहा सामने एक सोल्जर। ओ, ये पास आ रहा है। अगर गलती से भी इसके सामने जरा सी हलचल की यार तो गया। सामने उस तरफ जा रहा है। क्रॉल करके ही जाना पड़ेगा क्योंकि सामने बहुत है, तो आवाज सुन के भी पीछे घूम सकता है। अगर यार मेरे पास कोई गन होती यार, कब का चला जाता इसे मार के, और कोई गन नहीं है, ऐसे ही जाना पड़ेगा।
वैसे मैं इसे मार सकता हूँ पीछे से जाके चाकू मार के, पर अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे सांप। अरे अबे सांप ने काट लिया। शिट। ओके, क्योर में जाना होगा। पॉइजनिंग कंडीशन है, पॉइजन कंटिन्यूअसली यूटिलाइज टू क्योर, इंजेक्ट सीरम, सीरम इंजेक्ट करना होगा। तो सीरम तो आई गेस मेडिसिन में ही होगा, क्योंकि सर्जरी में तो नहीं होगा। मेडिसिन में ये रहा सीरम। ओके भाई, सांप भी काटता है यहाँ पे। ओके, मतलब सांप काटता तो है ही। अच्छा डिटेल किया है, बहुत बढ़िया। मतलब सांप के ऊपर से अगर क्रॉल कर दूँ तो सांप काट लेगा। ठीक है। प्रॉब्लम ये है, मुझे ये भी पता नहीं कि इसके साथ और कितने सोल्जर्स हैं, क्योंकि अगर मैं इसे मारने जाऊँ पीछे से चाकू और थोड़ा सा भी अलर्ट हुआ तो वो लोग आ जाएंगे, अगर कोई भी है इसके साथ तो, और फिर तो सही अलर्ट कर देंगे सबको, तो तब गड़बड़ हो जाएगी। तो इससे बच के ही जाना होगा। मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा, एकदम छुप छुप के आगे जा रहा हूँ। हाँ बहुत बढ़िया, इस तरफ कई राउंड फिर से घूम के आ, तब तक मैं यहाँ से भाग लेता हूँ। अरे यार, फिर से इस तरफ आ रहा है यार, यहीं पे घूमेगा क्या? एकदम सामने ही है, अगर जरा सा भी हिला तो पकड़ा जाऊंगा। 85% कैमोफ्लेज है, पर सामने ही है। जरा सा भी हिला इसके सामने तो पकड़ा जाऊंगा। यार उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ मैं जाना है मुझे। इस तरफ जब भी घूमेगा उसी वक्त भागना होगा मुझे। मतलब धीरे धीरे क्रॉल करके आगे जाके यहाँ से निकलना होगा। आजा, उस तरफ जा। यार जा ना। गया, यही मौका है। उस शट यहाँ पे था। ओके, बच गया बच गया। वो यहाँ पर सोल्जर ही था, देख ही लिया था, पर उसी समय मैं निकल गया यहाँ से। वो बच गया यार। पीछे तो नहीं आएगा? नहीं, आई थिंक नहीं आएगा। अब इस ब्रिज के सामने भी गार्ड्स हैं, इनसे भी बच के निकलना होगा।
इसे मारना ही होगा ये, वरना ब्रिज में घूमता रहेगा और मुझे ब्रिज से ही जाना है, तो इसे पीछे से मारना ही होगा। तो धीरे धीरे, तो प्लान है धीरे धीरे इसके पास जाके पीछे से मारना है। चाकू निकाल लेते हैं। अरे शिट, अरे यार अटक गया, समझ नहीं आया उसको मार। अब ले गिर जा। चलो ये प्लान अच्छा था। इस ब्रिज में कैमोफ्लेज चेंज करना होगा क्योंकि सामने भी और सोल्जर्स हो सकते हैं, उनसे बच के जाना होगा। अरे यार फिर से गिर गया। यहाँ पे दौड़ना बहुत मुश्किल है। अरे यार एक सेकंड, सीधा चल। यहाँ पे नॉर्मली दौड़ना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर भी पास में सोल्जर्स हो सकते हैं, तो संभल के जाना होगा। ओ शिट ओ शिट ओ शिट ओ शिट ओ शिट, पीछे 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 पीछे। ओ शिट, सामने ही है। गया। अब मैं हिल भी नहीं सकता। 85% कैमोफ्लेज है, अगर नहीं बच गया, दिखा नहीं उसे। 85% कैमोफ्लेज है इसीलिए नहीं दिखा। धीरे से, हाँ अब पीछे से हल्ला बोलते हैं। Who's that? यार गलती से उसके आगे आ गया था, उसे देख ही लिया था। अगर कोई होता इसके साथ तो मैं फिनिश था, क्योंकि इसे तो मार देता पर वो अलर्ट कर देता बाकी सबको और बस फिर तो कहानी खत्म। ओके सो हम फैक्ट्री तक पहुंच गए हैं जहाँ पे हमें एडम से मिलना है। फैक्ट्री में एडम से हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो तुम लोगों को ज़रा से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही गेम प्ले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।